So those who have joined just now, our topic is what? Direction and distance from reasoning. ठीक है, और इसमें डायरेक्शन एंड डिस्टेंस दोनों टाइप के क्वेश्चंस आते हैं. सो बेसिकली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस ऑन दिस टॉपिक. ठीक है, 3 अलग अलग टाइप्स हैं जिसपे आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. प्रीलिम्स में ये टॉपिक आता है, प्लस मेंस में भी ये टॉपिक आता है. ठीक है, प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों जगह पे आपको ये टॉपिक डायरेक्शन एंड डिस्टेंस मिलेगा इन एवरी एग्जाम. हर एक एग्जाम के लिए ये टॉपिक होता है. कोई भी एग्जाम होने तो दिस टॉपिक इज देयर फ्रॉम द सेक्शन रीजनिंग. ऑलराइट, देन तो जैसे कि आप सबने बताया दैट देर आर हाउ मेनी डायरेक्शंस, देर आर टोटल 8 डायरेक्शंस वी से, जिसे कहेंगे 4 मेन डायरेक्शंस होते हैं, दैट इज ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ. ठीक है, these are the 4 main directions, and in between 2 main directions, whichever directions are there, they are what? They are called as sub direction. जैसे कि नॉर्थ एंड ईस्ट में आएगा नॉर्थ ईस्ट, साउथ एंड ईस्ट के बीच में आएगा साउथ ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट के बीच में होगा साउथ वेस्ट, एंड नॉर्थ और वेस्ट के बीच में होगा नॉर्थ वेस्ट. ओके, सो टोटल 8 डायरेक्शंस, 4 मेन डायरेक्शंस एंड 4 सब डायरेक्शंस. ठीक है, ये चीज आप सबको पता है. देन इसमें अभी क्या याद रखना है कि नॉर्थ ईस्ट मतलब एक मेन डायरेक्शन और सब डायरेक्शन के बीच में जो एंगल होता है दैट इज ऑफ 45 डिग्रीज. ठीक है, between any two directions there is an angle of 45 degrees. और जब हम मेन डायरेक्शंस की बात करेंगे, फॉर एग्जांपल नॉर्थ एंड ईस्ट की अगर बात करेंगे, सो द एंगल इज व्हाट? 90 डिग्रीज. द एंगल इज व्हाट? 90 डिग्रीज. ठीक है, सो दिस इज द थिंग. कभी कभार ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं वेर इन एंगल्स आर इन्वॉल्व इन द क्वेश्चन, सो फॉर दैट यू शुड नो दिस. ओके, तो ये हो गया बेसिक. देन अब इस चैप्टर को आपको सॉल्व कैसे करना है, हाउ टू अटेम्प्ट द प्रॉब्लम्स ऑफ दिस, तो इस पे आपको इजी वे है अटेम्प्ट करने का, दैट यू नीड टू ड्रॉ डायग्राम्स फॉर दिस. ठीक है, इसके लिए आपको डायग्राम ड्रॉ करनी पड़ेगी. सो व्हाइल ड्रॉइंग अ डायग्राम व्हाट शुड बी योर मेन फोकस, कि पहले जहां से डायग्राम स्टार्ट हो रही है you should denote it with a dot and a circle. So this is what nothing but your starting point. ये आपका starting point है. फिर क्वेश्चन में जैसे कि कहा जाएगा that a person A has or is moving to east. ठीक है, तो this is east direction, वो east direction में move कर रहा है, arrow दिखा दो. It will be very very simple to assess. Then arrow दिखा दिया, फिर उसने लिया है left turn. ठीक है, उसने लिया है लेफ्ट टर्न. नाउ यू अज्यूम योरसेल्फ, खुद को अज्यूम करो दैट यू आर मूविंग इन द ईस्ट डायरेक्शन. तो ईस्ट डायरेक्शन में जा रहे हो तो दिस विल बी योर राइट साइड एंड दिस विल बी योर लेफ्ट साइड, राइट. तो ऐसे जब दिखाओगे तो लेफ्ट टर्न लिया, तो लेफ्ट टर्न लेने के बाद इट विल बी इजियर फॉर यू टू टेक अ लेफ्ट टर्न. फिर से यहाँ पे राइट लेफ्ट लिख दो, अगेन ही टुक राइट टर्न, तो यहाँ से राइट टर्न लेना बहुत आसान होगा. यहाँ से वो साउथ डायरेक्शन में गया तो दिस इज साउथ डायरेक्शन, अगेन दिस विल बी राइट, दिस विल बी लेफ्ट. तो राइट लेफ्ट अगर आपको डिनोट करना है तो वॉट एवर योर राइट एंड लेफ्ट विल बी, जो उस डायरेक्शन में आपका राइट एंड लेफ्ट रहेगा वही उस पर्सन का भी राइट एंड लेफ्ट रहेगा. ठीक है, तो ये सिंपल वे में आपको ड्रॉ करना है. देन जब डिस्टेंसेस आएंगे, ठीक है, व्हेनेवर डिस्टेंसेस विल बी गिवन एट दैट टाइम व्हाट यू हैव टू डू इज, आपको देखना है कि अगर एक डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है so it should look like this, और अगर दूसरा डिस्टेंस इज 15 सेंटीमीटर तो वो इससे थोड़ा बड़ा होना चाहिए. मतलब प्रोपोर्शनेट डायग्राम्स आपको ड्रॉ करने हैं. अब जितना प्रोपोर्शनेट डायग्राम्स बनाओगे आपकी डायग्राम उतनी अच्छी लगेगी एंड इट विल बी इजियर टू फाइंड आउट द आंसर्स. ठीक है, अब एक क्वेश्चन है, चलो यहाँ से ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था, हमने डायग्राम ड्रॉ करना स्टार्ट किया. ठीक है, दिस इज सपोज पॉइंट ए और ये हमारा एंड पॉइंट है, यहाँ पे वो पर्सन जाके रुक गया, दिस इज आवर एंड पॉइंट. सो सपोज आई नेम इट दिस एज पॉइंट बी.
दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, स्टार्टिंग पॉइंट ए, एंडिंग पॉइंट बी। अब मुझे बताओ व्हाट इज इन विच डायरेक्शन द पर्सन इज फेसिंग एट द एंड पॉइंट। एंड पॉइंट में पर्सन किस डायरेक्शन को फेस कर रहा है। ओके, प्रियंका ने वेरी क्विकली आंसर दे दिया, वेरी गुड प्रियंका। तेजस्विनी, मृणाल, गणेश, यस, ईश्वरी, प्रणीत, यस, वेरी गुड। सो दैट पर्सन इज एट द एंड पोजिशन, और वो कहाँ पे देख रहा है, ही इज फेसिंग टू द साउथ, साउथ डायरेक्शन को वो फेस कर रहा है। वेरी गुड मीना, ठीक है, साउथ डायरेक्शन को वो देख रहा है। Now, if my question is, what is the direction of person standing at point B with respect to the starting point? ठीक है, क्वेश्चन क्या है, direction of person at B with respect to starting point. With respect to starting point अगर मैंने लिख दिया, then what is the answer? Is it same or is it different? Very good Priyanka, Sheshrao and Ganesh, very good. With respect to starting point, east nahi, east, oh yes, with respect to starting point east, yes, yes, Hina, Pranit, everybody has given correct answer. With respect to starting point मतलब A की जगह अगर आप खड़े रहकर देखोगे तो B कौन से डायरेक्शन में है, ये कौन सी डायरेक्शन है, ईस्ट डायरेक्शन है। So when standing at the starting point, B is in east direction with respect to A. ठीक है, तो ऐसे दो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन रहते हैं। जो पहला वाला मैंने पूछा कि B is facing which direction, तो उसका आंसर था साउथ। लेकिन जब ये बात ऐड हो जाती है that with respect to starting point, with respect to starting point, when this gets added up, तो आपको starting point पे खड़े रहकर देखना है या वहां से आपको देखना है कि कहाँ पर है वो पर्सन। ठीक है, सो यस, इस क्वेश्चन का आंसर होगा ईस्ट डायरेक्शन। और जो पहला वाला क्वेश्चन था व्हाट इज द डायरेक्शन इन विच द पर्सन एट बी इज फेसिंग, सो दैट इज साउथ। तो दो अलग क्वेश्चंस और उसके दो अलग आंसर्स, और हमने वो कंसेप्ट भी समझ लिया। ठीक है, सो आपको याद क्या रखना है, स्टार्टिंग पॉइंट डायग्राम का बनाओगे विद अ सर्कल एंड अ डॉट, एंड देन राइट एंड लेफ्ट आपको ये करना है, अज्यूम करना है अकॉर्डिंग टू योर राइट एंड लेफ्ट, एंड सारे डायरेक्शंस याद रखने हैं। कितने डिग्रीज का एंगुलर डिस्टेंस है दैट यू नीड टू रिमेम्बर, एंड डायग्राम शुड बी प्रोपोर्शनेट। इतनी बातें याद रख लो, टॉपिक इजी है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर? रेज हैंड पे क्लिक करोगे तो भी चलेगा, नो नीड टू टाइप अगेन एंड अगेन, हमारे पास वो ऑप्शन है, रेज हैंड पे क्लिक करो, दैट विल बी रियली क्विक। या वेरी गुड, चलो then let's move on to the questions। ठीक है, ये टाइप 1 क्वेश्चन है, this is a type 1 question, let us solve this one। this is little bit, ये वाला सॉल्व करते हैं, this is easier one, let us solve this। ये टाइप 1 क्वेश्चन है, दिस इज जनरली फॉर अंडरस्टैंडिंग। हम अंडरस्टैंडिंग के लिए ये वाला टाइप का क्वेश्चन देख रहे हैं। ये वाला जो टाइप है वो बैंकिंग में नहीं आता है, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन बैंकिंग में नहीं आते, लेकिन जो एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं जैसे कि MBA-CET हो गया, कैट हो गया, वो सारे जो एंट्रेंस के एग्जाम्स होते हैं उसमें दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस यू विल गेट, यू विल नॉट गेट इट इन द बैंक एग्जाम्स। ओके, एंट्रेंस एग्जाम्स में मिलेंगे, SSC में मिलेगा, एंड रेलवेज में दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस यू विल फाइंड। ठीक है, सो लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन नंबर 3। मैं आपको बताती हूँ, आगे के क्वेश्चंस आपको ही करने हैं सॉल्व, सो आई विल जस्ट हेल्प यू विद दिस। तो चलो, तो पहला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, लेट्स रीड एंड ड्रॉ द डायग्राम। कुणाल वॉक्स 10 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। ठीक है, तो एक कोई भी स्टार्टिंग पॉइंट अज्यूम कर लो, ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है। कुणाल वॉक्स 10 किलोमीटर्स टुवर्ड्स नॉर्थ, सो दिस इज माय 10 किलोमीटर्स। ठीक है, नॉर्थ की तरफ गया है। नाउ व्हाट हैपेंस फ्रॉम देयर ही वॉक्स 6 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ, मतलब अभी देखो वो नॉर्थ में जा रहा है, मैंने थोड़ा सा इसको बढ़ा दिया, नॉर्थ में जा रहा है और वहां से ही वो टर्न लेता है टुवर्ड्स साउथ, तो मतलब वो वापस भी आ रहा है।
आफ्टर गोइंग टू नॉर्थ ही इज कमिंग बैक एंड हाउ मच 6 किलोमीटर, ठीक है। तो सपोज वो यहाँ पर आकर रुक गया, दिस इज द डिस्टेंस 6 किलोमीटर और टोटल डिस्टेंस है 10 किलोमीटर, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक है 6 एंड टोटल इज 10, ऑलराइट 10 किलोमीटर यहाँ से यहाँ, दिस इज 10। then he walks to 3 kilometer towards east, मतलब यहाँ से इस point से he is moving towards east, that is how much 3 kilometers. How far and in which direction is he with reference to the starting point, ठीक है। अभी direction तो आप बता दोगे, C कैसे आया भाई, C नहीं आएगा। देखो starting point is here and end point is here, starting point is here and end point is here. So if you see from the starting point वो कौन सी direction में है, this direction is north, ये वाली direction north है, right? और ये वाली direction कौन सी होती है, east होती है। He is between north and east, तो कौन सी direction होगी, north east, ठीक है। और डिस्टेंसेस के लिए देखो अभी यहाँ पे ठीक है, चलो एक ही ऑप्शन है नॉर्थ ईस्ट का, तो आप लोग मार्क कर लोगे, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउ टू फाइंड डिस्टेंसेस व्हेन इट इज आस्क्ड विद रेफरेंस टू हिज स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। डिस्टेंस भी विद रेफरेंस टू द स्टार्टिंग पॉइंट पूछा है, तो वो देखिए अभी यहाँ से फ्रॉम हियर, ओके, यहाँ से 3 किलोमीटर का डिस्टेंस है, ये पूरा फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट टिल दिस नॉर्थ पॉइंट 10 किलोमीटर से वो 6 किलोमीटर रिटर्न आया है, मतलब ये जो बचा हुआ डिस्टेंस है दैट विल बी 4, राइट। यू नीड टू फाइंड आउट दिस डिस्टेंस, ये डिस्टेंस आपको फाइंड करना है। सो लेट अस अज्यूम इट इज x, ये डिस्टेंस आपको फाइंड करना है। सो यू हैव टू अप्लाई व्हाट, पाइथागोरस थ्योरम। अकॉर्डिंग टू दैट व्हाट इट विल बी, x स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। So 3 square is 9, 4 square is 16. So x square will be 25 and square root ले लो इसका. So x will be equal to what, 5. So what distance you got, 5 kilometer. And direction क्या है, northeast. So option D will be the correct answer. Option D will be the correct answer. ठीक है। अगर किसी को कुछ भी समझ में नहीं आया है और you are having doubt anywhere, तो आप कमेंट में टाइप करो व्हाट योर डाउट इज, व्हिच स्टेप यू हैव नॉट अंडरस्टूड। यू कैन टाइप इट इन द कमेंट्स, चैट में टाइप करो। सबको क्लियर अगर हुआ है तो रेज हैंड ऑप्शन पे क्लिक करो इफ द डायग्राम ड्राइंग एज वेल एज जो हमने सॉल्व किया है डिस्टेंस के लिए। what point, Mrunal, exactly what point do you want, just tell me that. Repeating whole thing में time जाता है, so exactly which point, north east वाला, okay। See देखो north east में ये starting position है, right? Whenever it is asked with reference to his starting point, तो ये जो starting point होगा ना, इसको आप ऐसे assume करोगे, starting point एकदम बीच में है, starting point के ऊपर है north, नीचे है south, यहाँ पर है ईस्ट, यहाँ पर है वेस्ट। सो दिस इज योर स्टार्टिंग पॉइंट। इस डायग्राम को ऐसे आपको ये स्टार्टिंग पॉइंट पे रखना है। सो नाउ दिस डिस्टेंस इज बिटवीन नॉर्थ एंड ईस्ट। यहाँ पे ये अगर स्टार्टिंग पॉइंट है तो दिस साइड विल बी ईस्ट एंड दिस साइड विल बी नॉर्थ। सो दिस पॉइंट, एंड पॉइंट इज बिटवीन नॉर्थ एंड ईस्ट एंड दैट इज व्हाई द डायरेक्शन इज व्हाट, नॉर्थ ईस्ट। दैट इज व्हाई द डायरेक्शन इज नॉर्थ ईस्ट। क्लियर मृणाल? यस। Okay. So now you can solve this question number 4. You can solve question number 4. Yes, question number 4. Okay.
ऑप्शन सी भी मिला है एंड ऑप्शन ए मिल रहा है. ओके, ऑप्शन सी एंड ए में थोड़ा कंफ्यूजन चल रहा है आपका. ओके, मैक्सिमम आप विथ ऑप्शन ए. ऑप्शन सी के बस थोड़े ही है. ठीक है, चलो देखते हैं. टीना ड्राइव्स 45 kilometers towards east. Okay, so she is driving 45 kilometers towards east, then turns right and drives 65 kilometers, then turns left and drives 33 kilometers. In which direction is she facing now? So yes, option A, it is east. With respect to starting point या वगैरह ऐसे कुछ बोला नहीं है, so that is east direction. Direction में confuse मत होना. She is facing east direction. Okay, east direction. So option A is absolutely correct. ठीक है, ये है एक टाइप का क्वेश्चन, दिस टाइप 1. Now this is, ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 8, दिस इज अ टाइप 2 क्वेश्चन. ठीक है, ये सेकंड टाइप ऑफ अ क्वेश्चन है जहां पर ऐसे आपको बताया जाएगा दैट A is located to the west of B, C is located to the north in between A and B. ऐसे टाइप के ये क्वेश्चंस आएंगे. Sometimes it will be given that A, B, C, D ये सारे villages हैं. Sometimes it will be given as their shops. या ऐसे आपको बताया जाएगा. So let's see क्या बोला है. देखो, A is located to the west of B. A कहाँ पे located है? B के west में. ठीक है. So first you will have to draw B, and where A is located, west of B. किसके west में? B के west में. So this is B. यहाँ पे ये middle है. West मतलब कहाँ पे होगा? Here somewhere. Distances की कुछ भी दिए नहीं है. देखो यहाँ पे no distances are given. Just draw the diagram. फिर बोला है C is located at north in between A and B. A and B के बीच में C located है in north. तो यहाँ पे कहीं पे तो C होगा at north in between A and B. A और B के बीच में. फिर क्या बोला है? That D is exactly to the south of B and also in line with B. Okay. D is exactly साउथ ऑफ बी, मतलब यहाँ पर डी होगा and exactly in line with B. So in which direction of C is D located? Okay. D के कौन से डायरेक्शन में C लोकेटेड है? क्या लग रहा है आपको? Questions, you will not get questions. You will get recording of this. You will not get questions. Northwest आना चाहिए ना? That will be very true. D is C is located at north between A and B.
नॉर्थ वेस्ट तो होना चाहिए बट ऑप्शंस में नहीं है। उल्टा पूछा है, डी का डायरेक्शन पूछा है। यस, वेरी गुड, बिल्कुल आपको समझ में आ गया दैट सी के मुकाबले में डी कहाँ पे है, इन विच डायरेक्शन ऑफ सी इज डी लोकेटेड, सो इट इज ऑप्शन बी साउथ ईस्ट, ऑप्शन बी साउथ ईस्ट। तो ऐसे ध्यान से आपको करना है, एग्जाम्स में भी ऐसे ही ध्यान लगाकर करना है, अदरवाइज देखो ऐसे गलत हो जाता है ना। क्या पूछा था, डी का लोकेशन पूछा था विद रिस्पेक्ट टू सी, डी का लोकेशन पूछा था विद रिस्पेक्ट टू सी। ओके, चलो। सो ये जो टाइप है ना, ये टाइप का जो क्वेश्चन किया है, दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन बैंकिंग एग्जाम्स नाउअडेज। Let us move on to this question. Now this ये क्वेश्चन भी सेम ही है, बट इसमें क्या फर्क है कि इंफॉर्मेशन जो है वो थोड़ी पैराग्राफ फॉर्मेट में या थोड़े बड़े सेंटेंसेस, ज्यादा सेंटेंसेस दिए हैं। Those questions were only one sentence or two sentence questions. These are little big questions and एक इंफॉर्मेशन पे दो या तीन क्वेश्चंस पूछेंगे, ठीक है। हियर सी व्हाट इज रिटन, रीड द गिवन इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिसाइड। देयर इज अ सेट ऑफ टू क्वेश्चंस, दो क्वेश्चन का क्या दिया है यहाँ पे, सेट दिया है, देयर इज अ सेट ऑफ टू क्वेश्चंस, ठीक है। चलो देन लेट अस सॉल्व दिस, सॉल्व करते हैं। इंफॉर्मेशन इज इन फ्रंट ऑफ यू, क्वेश्चंस आर आल्सो इन फ्रंट ऑफ यू, ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, देन यू विल सी द आंसर टू दिस। ध्यान से पढ़ते जाओ एंड डायग्राम ड्रॉ करो, यू विल गेट द आंसर टू द क्वेश्चन। Answer both the questions at once. Diagram is same and you have to answer both the questions on same diagram. So answer both the questions at once.
8 kilometer and second one is east. Okay. All right, chalo, let's see the answer. Let us try to draw the diagram. So क्या बोला है? Ananya goes to the departmental store which is to the north of her house. Okay, तो यहाँ पर उसका house है अनन्या का, and she goes to the departmental store यहाँ पर which is 6 kilometer. 6 kilometers है. After shopping, she decides to visit her friend Ayushi. Hence, turns to the right and reaches her friend's house. ठीक है, तो यहाँ से from the store she turns right. So in this direction, and she goes 8 kilometers to visit her friend's house Ayushi. Hence, turns to the right. Okay. From there, she visits a shop which is 6 kilometers away, taking a right turn. Again, from here, she is taking right turn, means in this direction. And she is going how much? 6 kilometers. And she is visiting another shop. Finally, she turns to the right and phones up to the house to send a car. मतलब यहाँ से वो right turn लेती है. She is not gone any distance further. सिर्फ उसने right turn लिया है और वो रुक गई है. So this is the diagram basically. How many of you have got this correct diagram? Just raise your hand. Hand raise पे click करो. किसको ये diagram मिली है? Same as it is. Okay, okay. Very good, very good. Good, great, great. चलो. डायग्राम एक बार आपके अच्छे से आने लग गए तो क्वेश्चन के आंसर्स भी आराम से आ जाएंगे. वेरी गुड. So now first question is what? How far is Ananya from her house? So yes, obviously यहाँ पे ये जो distance आपको दिख रहा है उतना ही distance उसे cover करना है. Same distance. यहाँ से यहाँ तक जो distance में गई है same distance she has to cover. So this is what? Nothing but 8 kilometer. अगर ये 8 है तो ये भी 8 ही होगा. If this is 6 और ये जो 6 किलोमीटर बोला है वो same ही आएगा. That will be parallel only. And second question, in what direction should the driver take the car to pick up Ananya to bring her back? So यहाँ पे उसका घर है, यहाँ से वो जाएगा. So obviously he will go in which direction? East direction. So option B is absolutely correct. Option B, east. Very good students. बहुत अच्छे, आप सबने बिल्कुल अच्छे से सॉल्व किया है क्वेश्चन को. वेरी गुड. तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है 8 किलोमीटर एंड सेकेंड क्वेश्चन का आंसर है ईस्ट. Then solve this one. Take a screenshot of the questions. You can take a screenshot and you can write afterwards. अभी भी अगर आप लिख रहे हो तो भी I have no problem. You can write it down ताकि आपका बाद में टाइम उसमें वेस्ट ना हो in writing the questions. If you want to write, you can write it down now.
यस, क्या आंसर मिला है आपको? ओके, चलो लेट्स सी द आंसर टू दिस। क्या बोला है? पॉइंट ए 7 मीटर टुवर्ड्स द वेस्ट ऑफ पॉइंट बी। सो अगेन, इसके वेस्ट में है, बी के वेस्ट में। सो बी आई विल ड्रॉ हियर एंड पॉइंट ए इज हियर समवेयर। द डिस्टेंस इज हाउ मच? 7 मीटर। 7 मीटर का डिस्टेंस है। देन पॉइंट बी इज 3 मीटर टुवर्ड्स द नॉर्थ ऑफ पॉइंट सी। अभी पॉइंट बी कहाँ पे है? नॉर्थ में है। किसके नॉर्थ में? सी के नॉर्थ में। अगर बी सी के नॉर्थ में है तो सी कहाँ पे होगा? बी के साउथ में। so this is C and here the distance will be 3 meters. Then point D is 4 meters towards west of point C. D के वेस्ट में, सॉरी C के वेस्ट में point D है at a distance of 4 meters. ठीक है। अब यहाँ से दूसरी चीज है, क्या समझ जाओ कि D से अगर आप एक लाइन ड्रॉ करोगे यहाँ पे, ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है, डॉटेड लाइन का जो डिस्टेंस है, दैट विल बी 3। बी से लेकर यहाँ तक, इस पॉइंट तक, एट दिस पॉइंट द डिस्टेंस विल बी 4। अब ए टू बी डिस्टेंस टोटल 7 मीटर है, तो ये बचा हुआ डिस्टेंस कितना होगा? दिस विल बी 3 मीटर, दिस इज 4 मीटर, दिस इज 3 मीटर। क्या ये डिस्टेंसेस ऐसे होंगे? आर यू गेटिंग सेम डायग्राम? सबको यही डायग्राम मिली है? रेज हैंड पे क्लिक करके बताओ, आर यू गेटिंग द सेम डायग्राम? चलो, देन फर्स्ट क्वेश्चन, a person walks 3 meters towards north from point D. ओके, देखो यहाँ से वो चल रहा है 3 मीटर एंड रिचेस पॉइंट ई, तो यहाँ पे पॉइंट ई पे आ गया। हाउ फार एंड टुवर्ड्स विच डायरेक्शन ही विल हैव टू वॉक टू रीच पॉइंट ए? तो ई से पॉइंट ए तक जाना है, डिस्टेंस तो हमें पता है 3 मीटर, और कहाँ पे चलते जाना है? वेस्ट। सो ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। एंड क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इफ अ पर्सन वॉक्स 3 मीटर टुवर्ड साउथ फ्रॉम पॉइंट ए, 3 मीटर टुवर्ड साउथ फ्रॉम पॉइंट ए। ओके, देखो डायग्राम जिनको रिपीट चाहिए, देखो क्या बोला है? अ पर्सन वॉक्स 3 मीटर टुवर्ड्स द पॉइंट डी, सॉरी पॉइंट ए 7 मीटर टुवर्ड्स वेस्ट ऑफ बी। तो बी यहाँ पे है, वेस्ट ऑफ बी, बी के वेस्ट में ए रहेगा, है ना? द डिस्टेंस इज 7 मीटर।
Then point B is 3 meter towards the north of point C. B किसके नॉर्थ में है? नॉर्थ ऑफ पॉइंट C. C के नॉर्थ में, तो C ऑब्वियसली नीचे होगा ना, C के नॉर्थ में. अभी ये आ गया पॉइंट B इन द नॉर्थ ऑफ C. Distance is 3 meter. Then point D is 4 meter towards west of point C. Point C के वेस्ट में कौन है? point D. यहाँ पे डिस्टेंस कितना बोला है? 4 मीटर. वेस्ट तो इसी साइड में है, राइट? तो दिस इज द डायग्राम. क्लियर हो गया? तहरीन एंड कौन? मृणाल, आई गेस. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 हो गया ना. क्वेश्चन नंबर 7 अभी क्या बोला है? पर्सन वॉक 3 मीटर टुवर्ड साउथ फ्रॉम पॉइंट ए. पॉइंट ए से 3 मीटर टुवर्ड साउथ, मतलब यहाँ पर ही आएगा, ये डी और सी के लाइन में ही आएगा 3 मीटर. Which of the following 2 points would fall in the straight line including F? तो कौन से पॉइंट है? C and D. ऑप्शन डी आएगा. F के लाइन में, F के लाइन में कौन से पॉइंट्स दो आ रहे हैं? D and C. सो ऑप्शन डी. ठीक है, क्लियर एवरीवन? ओके, ऑल राइट. चलो, नाउ ये हो गया. अभी 2 टाइप के क्वेश्चंस हमने देख लिए. अब इसमें जो थर्ड टाइप का क्वेश्चन आता है, लेट अस सी दैट. ओके, सो दिस इज द थर्ड टाइप ऑफ अ क्वेश्चन, जहाँ पे क्वेश्चंस विल बी इन दिस फॉर्मेट, मतलब कोडेड फॉर्मेट में दिए होंगे आपको, कोडिंग किया होगा क्वेश्चंस का. ठीक है, दिस इज द कोडेड फॉर्मेट क्वेश्चंस. ओके, एंड दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस ओनली आर फॉर मेंस एग्जाम. ठीक है, ऐसे क्वेश्चन मेंस एग्जाम में ही आते हैं. दिस क्वेश्चंस आर इन मेंस एग्जाम बैंकिंग के. ठीक है, ऐसे वाले क्वेश्चंस किसी भी एंट्रेंस में या फिर एसएससी या फिर रेलवेज में नहीं आते. ओनली मेंस एग्जाम ऑफ बैंकिंग में आते हैं ऐसे क्वेश्चंस. ऑल राइट, तो अब क्या करना है देखो. जस्ट यू हैव टू डिकोड. मतलब यहाँ पे ये जो सिंबल आपको दिख रहा है, प्लस ये रेज टू का सिंबल है, एंड माइनस, स्लैश, तो ये सारे सिंबल्स का क्या दिया है यहाँ पे? डिकोड करके दिया है कि P plus Q states that P is 2 meter east of Q. मतलब क्या है कि कोई भी 2 अल्फाबेट्स के बीच में, ठीक है, between any 2 alphabets, if there is a plus sign, plus symbol, then what does it mean? That the first symbol, ठीक है, वो symbol, वो जो लेटर है उसको भी ध्यान से देखना है. कभी कभी उल्टा भी लिख सकते हैं, यहाँ पे Q लिख सकते हैं, यहाँ पे P लिख सकते हैं. It can be reversed sometimes. So you have to read it very carefully, and then you have to decide how to draw. तो यहाँ पे क्या बोला है? P is 2 meter east of Q. प्लस का मतलब क्या है? जो पहला वाला अल्फाबेट होगा, that is in the east of the another alphabet. डायग्राम कैसे बनेगी? Q यहाँ पे होगा and P will be here. P will be in the east of Q, and distance is how much? 2 meter. This will be the diagram. यहाँ से ऐसे डायग्राम बने. Then रेस टू का सिंबल है. रेस टू के सिंबल में क्या बोला है? That first alphabet is in south of the next alphabet. मतलब Q के साउथ में कौन होगा? P होगा. And distance is 2 meter. 2 meter का डिस्टेंस. Similarly, and minus slash इसके लिए वैसे ही होगा. Now you have to apply this in your question. ठीक है, ऐसे आपको इंफॉर्मेशन दी जाएगी. Not necessary to learn this कि प्लस का सिंबल मतलब ईस्ट में ही होगा, रेस टू का सिंबल मतलब साउथ में ही होगा. क्वेश्चन में, एग्जाम में सिंबल्स विल बी डिफरेंट, उसका मीनिंग कुछ अलग होगा. Meaning will not be same always. So whatever is given in the question, according to that you have to solve. ठीक है, and dependent upon this information there will be 5 questions. कितने क्वेश्चंस आएंगे? 5 क्वेश्चंस आएंगे depending upon this information. ऐसे सिंबल्स एंड उसकी information जो दी जाएगी. All right, so here also on this information series 1, 2, 3, 4 and 5 questions हैं आपको इस वाले information के.
सो नाउ फर्स्ट लेट अस ट्राई टू ड्रॉ द डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, a माइनस बी, बोला क्या है a माइनस बी। तो माइनस के लिए क्या है, देखो p माइनस क्यू स्टेट्स दैट p इज 2 मीटर वेस्ट ऑफ q। माइनस साइन किसके बीच में है, a एंड b। इट मीन्स दैट a विल बी इन वेस्ट ऑफ b, a इज इन वेस्ट ऑफ b। a कहाँ पे है, b के वेस्ट में। डिस्टेंस इज हाउ मच, 2 मीटर। देन नेक्स्ट b और c को पढ़ो, b एंड c के बीच में रेज टू का सिंबल है। व्हाट डज इट सेज, दैट यहाँ पे p और q के बीच में, मतलब फर्स्ट अल्फाबेट इज इन साउथ ऑफ द सेकंड। तो b और c के बीच में क्या बोलेंगे, b इज इन साउथ ऑफ c। b और c के केस में क्या बोलेंगे, b इज इन साउथ ऑफ c। सो b इज इन साउथ ऑफ c। तो c यहाँ पे होगा, और c के कौन सा थर्ड पॉइंट, ये एंड वाला। अगेन सी मीनिंग सेम है, बस डिस्टेंस अलग है। p एंड q का देखो, p इज इन 4 मीटर ईस्ट ऑफ q। ये तो सारा आप सेम ही लगाओगे ना, जैसे p प्लस q के लिए हमने कैसे डिकोड किया, वैसे ही सारे इसके लिए आपको करना है। इट इज वन एंड द सेम थिंग। p इज इन ईस्ट ऑफ q, p इज इन ईस्ट ऑफ q, बस डिस्टेंस बदल गया है, दैट इज 4 मीटर। दैट्स इट। Okay, so accordingly only we are going to draw the diagram। उसी पे बेस्ड हम डायग्राम ड्रॉ करने हैं, तो डायग्राम ड्रॉ करना सीखो आप, ठीक है। देन नेक्स्ट सी एंड डी, सी और डी के बीच में एंड का सिंबल है, विच सेज व्हाट, सी इज इन 4 मीटर ईस्ट ऑफ क्यू। सी कहाँ पे है, ईस्ट में है, किसके ईस्ट में, डी के ईस्ट में। एंड द डिस्टेंस इज हाउ मच, 4। अब मैंने ये 2 मीटर इतना बड़ा बनाया है, इसलिए मैंने सी और डी का डिस्टेंस जो है वो ऐसे इतना बड़ा वाला बनाया, बिकॉज इट इज 4 मीटर। सो इट शुड लुक लाइक वन, कि ये 4 मीटर है, ये 2 मीटर और ये 2 मीटर, ठीक है। देन डी और ई के बीच में है प्लस का सिंबल, विच सेज दैट डी इज इन ईस्ट ऑफ ई। डी किसके ईस्ट में है, ई के ईस्ट में। सो ई और यहाँ पे होगा 2 मीटर का डिस्टेंस। एंड लास्टली एफ प्लस बी, एफ और बी के बीच में प्लस का सिंबल है, उससे क्या होता है कि एफ इज इन ईस्ट ऑफ बी। एफ कहाँ पे है, एफ विल बी ईस्ट ऑफ बी, बी के ईस्ट में है एफ। डिस्टेंस इज 2। सो दिस इज आवर फाइनल डायग्राम, ठीक है, दिस इज आवर फाइनल डायग्राम। और अभी ये जो सेम इक्वेशन है ना, ये वाला सेम इक्वेशन एटलीस्ट 3 क्वेश्चंस में आपको मिलेगा। देखो यहाँ पे भी सेम है, क्वेश्चन नंबर 2 में भी सेम इक्वेशन है, क्वेश्चन नंबर 3 में भी सेम है, क्वेश्चन नंबर 4 में चेंज हो जाता है, 5 में चेंज हो जाता है, बट एटलीस्ट 3 क्वेश्चंस ऑन द सेम डायग्राम यू कैन सॉल्व। 3 क्वेश्चंस ऑन सेम डायग्राम। डायग्राम सबको क्लियर हो गई, कैसे ड्रॉ करनी है, दैट इज द मेन थिंग, कि आपको डिकोड करके ड्रॉ करना है। वो एक बार समझ में आ गया तो क्वेश्चन सॉल्व करना इज नॉट सो डिफिकल्ट, ठीक है। चलो, सो व्हाट इज द आंसर, पहले क्वेश्चन का आंसर बताओ क्या होगा। एफ इज इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू ई। यस, ऑप्शन डी, साउथ ईस्ट, वेरी गुड, साउथ ईस्ट,
ये क्वेश्चन आप लिख लो, ये जो इन्फॉर्मेशन है ना, ये P plus Q वगैरह ये सब राइट डाउन, because you have to solve the questions on basis of that only, so write it down. Completed writing. So question also, question number 1 भी लिख लो. Done. Okay, ये देखो क्वेश्चन नंबर 2. Expression is same, don't write down the expression, just write down this main question. What is the shortest distance between D and B? What is the shortest distance between D and B? जब ये ऐसे shortest distance पूछा जाए, always go by Pythagoras theorem. Okay, solve it by Pythagoras theorem. D and B का distance. So this way, यहाँ पे this will be the dotted line. This is 4, this is 2. तो x, ये डिस्टेंस d और b का डिस्टेंस होगा x. x square is equal to 4 square plus 2 square. Pythagoras theorem. x square is equal to 4 square plus 2 square. So that is 16 plus 4, that is equal to 20. It will be what? 2 root 5. X will be equal to 2 root 5. Option A. Yes, option A. Yes, प्रियंका ने सबसे पहले आंसर दिया. वेरी गुड प्रियंका. नितेश, वेरी गुड.
देखो 20 इज इक्वल टू क्या होता है 4 into 5 √20 क्या लिखोगे 4 into 5 व्हाट इज द रूट ऑफ 4 इट इज 2 and in √5 so this way. ओके चलो क्वेश्चन नंबर 3. ये क्या मैंने बताया ना यहाँ पे √20 को आप ऐसे लिखोगे 4 into 5. 4 का रूट क्या होता है 5 का रूट तो कुछ होता नहीं है so that will remain √5. what is the root of 4 it is 2 so this way 2 √5. चलो क्वेश्चन नंबर 3. चलो व्हाट इज द आंसर टू दिस. इफ क्या लिखा है अ पॉइंट G इज ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट F टुवर्ड्स 2 मीटर नॉर्थ ऑफ F के नॉर्थ में G पॉइंट अगर बना दिया सो इट विल बी समवेयर हियर. द डिस्टेंस इज 2 मीटर. ठीक है. ओके आई यूज अ डिफरेंट पेन. ओके पॉइंट G को ड्रॉ किया है F से एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर. ठीक है. एंड फिर क्या बोला है देन C इज इन व्हाट डायरेक्शन एंड व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम G. सो G से C तक का डिस्टेंस कितना होगा इट विल बी सेम 2 मीटर. एंड व्हाट इज द डायरेक्शन वेस्ट. C is in west direction from G. G से कहाँ पे है वो 2 मीटर वेस्ट. ऑप्शन डी. ऑप्शन डी. यहाँ पे डायग्राम देख लो अच्छे से. क्या बोला था क्वेश्चन में G is drawn in the north of F at a distance of 2 meter. Then C will be in what direction from point G. तो G से अगर आप C को देखो it is in what west direction from point G and the distance is what 2 meter.
Okay. Now question number 4. This is the diagram. So this is the expression for question number 4. What it is said, U and V. So I think U will be like this. U will be in east of V at a distance of 4. Yes, at a distance of 4. Then V and W, V raised to W, it says V is 2 meters south of W. V is in south of W. Then W minus X. It says W is 2 meter west of X. So X के west में is W. It is 2 meter. And sorry, X slash Y. It says X is in north of Y. X is in north of Y. मतलब Y यहाँ पे होगा. And this is 2 meter. So this is also 2 meter. And this is also 2 meter. And total V and U it is 4 meter. और last में क्या है? Y and Z. So it says that Y is in east of Z at a distance of 4 meter. So this is 2. So this is the diagram. So क्या बोला? What is the area of square formed by points V, Y, X and W? So area क्या होगा? Area of a square का formula क्या होता है? Side square. So side it is what? 2 square. So that is equal to what? 4 meter. सबको diagram same मिला है क्या? Are you getting the same diagram, everybody? Just raise your hand if you are getting same diagram. Hand raise पे click करो. Okay, very good.
stronger. Then last question, question number 5. Okay, what is the direction of W with respect to U? That is northwest. Option D. Yes, correct. Northwest. Option D. Absolutely. Northwest. ओके, तो सबको सारे टाइप्स जो है वो क्लियर हो गए. हाउ टू ड्रॉ द डायग्राम, कैसे आपको डायरेक्शन पता करना है, डिस्टेंस कैसे निकालना है, एवरीथिंग इज क्लियर टू यू ऑल. All right, all right. And how do you like today's lecture? Those who are newly attending my session for the first time, concept आपको clear हो गया? Everybody? Oh, oh, oh. All right then. Let us stop here for today.